Before we start building networks, let me give you a quick tour of the Packet Tracer interface so you know exactly where everything is and how it works. This is the interface of the Packet Tracer, and at the top we have the main toolbar, and here you can open a new file and you can save your projects here, and you can also print your diagrams. After that you have edit options and view. In the view section you have zoom in, zoom out. This is useful when you have a very large network to look view better. And yeah, this is the main toolbar, and below this you can see there are two tabs, logical tab and physical tab. इन द लॉजिकल टैब यहाँ पे जो हम जो भी नेटवर्क क्रिएट करते हैं लॉजिकली वो दिखता है, ठीक है. इन द फिजिकल टैब you can see it like in a real world. So in the below section you can see this is the device selection bar. Okay, तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस है, नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस, हब है और भी वायरलेस है, सिक्योरिटी डिवाइसेस है, ठीक है. तो यहाँ पे सब सेक्शन है, कैटेगरी. अगर इसमें मैं क्लिक करती हूँ स्विच पे तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्विच के टाइप्स दिख जाएंगे. तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं विच वन यू वांट. तो यहाँ पे ये एन डिवाइसेस है. एन डिवाइसेस किसके लिए, मतलब लाइक होम नेटवर्क के लिए एन डिवाइसेस अलग है, ठीक है. यहाँ पे होम नेटवर्क के लिए है, एंड दिस इज़ फॉर स्मार्ट सिटी, दिस इज़ फॉर इंडस्ट्रियल नेटवर्क. ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हर एक सेक्शन है डिवाइसेस के लिए. एन डिवाइसेस में आपको मेन पीसीज है, लैपटॉप, सर्वर्स और वायर्स, ठीक है. कनेक्शंस में भी यहाँ पे बहुत सारे वायर्स है, ठीक है. कंसोल केबल है, कॉपर, स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस ओवर केबल, फाइबर केबल. तो इस तरह से ये वाला सेक्शन जो है पूरा डिवाइसेस एंड केबल्स हमको यहाँ पे मिल जाएंगे. ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, यू जस्ट हैव टू क्लिक दिस डिवाइस, ड्रैग एंड ड्रॉप हियर, ठीक है. सो ये जो वाइट स्पेस है ये वर्क स्पेस है, यहाँ पे ही हम हमारे नेटवर्क्स जो है यहीं पे हम बिल्ड करेंगे, ठीक है. अब मुझे इस डिवाइस को डिलीट करना है तो मुझे इस क्रॉस ओवर को क्लिक कर यहाँ से इस डिवाइस को डिलीट कर देंगे. At the bottom right you'll see real time mode and simulation mode. There are two tabs. In real time mode you can see a live packet movement in a network, and in simulation mode it will show you how step by step packet move from one device to another device. Okay, so it will also give you an insight information of a packet. That's your quick tour of a packet tracer. Now that you know where everything is, let's build your very first network step by step. Go down here and in end devices select PC. I will take to PC, and then in network devices choose a router, and below this you can see, okay, hub, switches and routers. I will select switch. Now connect them with a wire, so straight through cable for PC to switch, and then connect to router with G00 cable. Then go open router, go to CLI, and then move, enable configuration terminal, interface G00, IP address 192.168.1.1, 255.255.255.0, and then no shutdown. Okay, the link is green. Now assign IP address to
PCs, go to desktop, then IP configuration, and then here assign manually 192.168.1.10, and the default gateway will be 192.168.1.1. Desktop IP configuration 192.168.1.20, 192.168.1.1. Now let's see ये ping होता है नहीं. Go to PC1 and then in command prompt ping 192.168.1.20. Yes, as you can see, replies are coming back. ठीक है, तो यहाँ पे communication हो रहा है. You have just built your first network in Cisco Packet Tracer. See you in the next video.